Yeah, sorry, my bad. I think I started recording a little bit late. Maybe the first 10 minutes of the recording are missing, but I guess someone can look at the previous session to look at the recording, right? So let me start from where I was. Maybe I'll just quickly give an intro again. So we were talking about trailing 12 months or last 12 months or पिछले 12 महीने, right? For this company, the last 12 months are April, May, June, Jan, Feb, March, October, November, December, and July, August, September, right? These four are the trailing 12 months, right? So therefore, you add up these four and you get this trailing 12 months number. You add up the last 4 quarters of the company, right? So again, this company had a sales of 711 crores in the last 12 months, which means that पिछले 12 महीने में or in the last 12 months, the customers paid 711 crores to this company on an accounting basis. They had expense of 475 crore, which means that they spent in salaries, in cost of goods sold, and in different kinds of expenses that they had, almost 475 crore. They made an operating profit or operating salary of 236 crore, right? The margin percentage is 33%, which is 236 upon 711. They had a very minimal other income of 3 crores. 56 crore was the interest that the company had to pay. अपने कर्जे पे उन्हें interest देना पड़ा. 27 crore was a depreciation. Basically उनके assets का जो life बीता उसकी वजह से. And 157 crore was a profit before tax. They paid 36 crore of tax and 121 was a profit after tax. Now comes the most important line in investing. The job of a company is to constantly increase profits. Making profits is not enough. Profit FD भी बना देती है. The job of a company is to constantly increase profits. Profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा. Profit नहीं बढ़ेगा तो price नहीं बढ़ेगा. Profit गिरेगा तो price गिरेगा. This is the most important line of investing. Profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा. Profit गिरेगा तो price गिरेगा. Okay. Now, with this line in mind, tell me if this company is doing its job properly. Is this company increasing its profits? Yes or a no? Is this company doing a good job or a bad job? This company has increased profits from 6 crore to 120 crore. If you were the owner of this company, would you be happy or would you be sad? यार मेरा profit 6 crore से 120 crore हो गया, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ. Or would you be very happy? You would be happy, right? कि 6 crore का profit 120 crore हो गया. Salary भी बढ़ा सकते हो अपनी if you are the promoter of this company, right? So obviously you would be happy, right? कि profits have increased from 6 crores to 120 crores, right? You would be happy that, okay, I am doing well, my company's profits are increasing, right? Let's see if the stock market agrees with what we are saying or not. Okay. So we said that profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा, profit गिरेगा तो price गिरेगा. The price of this company was 25 rupees in 21. Today the price is 800 rupees. Does the stock market agree with the logic? Yes or no? Yes, the stock market does agree with the logic that profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा, profit गिरेगा तो price गिरेगा. This is one example. Let us take some more examples also, right? Maybe we take another example. Let's take the example of this company. Okay. Now tell me if this company is doing a good job or a bad job. It had a profit of 1 crore in 2016, 2 crores, 3 crores, 6 crores, 14, 20, 35, 64, 75. If you were the owner of this company, would you be happy or sad? Right? You would be happy, right? कि भाई profit कितना बढ़ गया है from 1 crore to 75 crore, right? And I think Priyanshi was saying that she has no experience in investing. Are you able to understand this, Priyanshi? That this company has increased profits from 1 crore to 75 crore.
and it is doing a good job. Is that understandable? So yes, this company is doing a good job and the profits have increased from 1 crore to 75 crore. Now let us check if stock market agrees with us or not. Okay. And see, this is just profits are just one part of thing. There are other things also. So please attend the full session. Then only think that you've learned investing. Abhi we will. It's a pretty long 2 घंटे का session hai. So please be patient, right? So the price was 20 rupees in 2019, and today it's 2,500 rupees. Does the stock market agree with us that this company is doing a good job? Yes or no? Yes, the stock market agrees with us, right? Someone is asking how should we make sure that we don't give profits back to the market? I'll answer that question, Harish bhai. Okay. Anyway, so clearly profit बढ़ेगा तो price बड़ा है. हमारा logic हमें लगता है अभी तक काम कर रहा है. ठीक है. The logic is working basically. Now let us look at another company, and this is the company which Rakesh Jhunwala made money. He turned almost 15 crore into 15,000 crore. Okay. Let us look at whether this is a good company or a bad company. Okay. Is this company increasing its profits? Yes or no? 600 crores to 3,200 crores. Is this company increasing the profits? Yes or no? Yes, it is not a bad company. It is a good company, right? It's a fairly stable company also. काफी steadily इन्होंने profit बढ़ाया है. Maybe. Okay, one more question. Why did the company's profits reduce so badly in March 21? Why did this company's profits reduce? The correct answer is COVID, right? It was the COVID year. That is why the profits reduced so badly. Okay, now let us look at this company. Bajaj Finance. Yes. Okay. So, is this company doing a good job or a bad job? Sorry. From 898 crore to 12,000 crore. 1,000 crore to 12,000 crore, the profits increased. Good job or bad job? It is a good job. Obviously, the company is increasing profits, right? Profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा. Profit गिरेगा तो price गिरेगा. Now let us look at one more company. Okay, maybe let's look at this company. Okay. Has this company done a good job over the last 10 years? Has this company done a good job over the last 10 years? Yes or no? The profits were 1,400 crore in 2015. Today it's also almost 1,400 crore. Has this company done a good job or a bad job? It's not a good job, right? It's a very, very average job, right? So, and let us check if the profits are increasing or not. And people have to be patient. We'll figure out multi-bagger companies also, how to figure multi-baggers, but let's just wait. Let us just understand the basics of investing first, right? So has the price increased in the last 10 years? The price has not increased in the last 10 years. Clearly, profit नहीं बढ़ा, तो unfortunately price भी नहीं बढ़ा. Profit नहीं बढ़ेगा, तो price भी नहीं बढ़ेगा. Profit बढ़ेगा, तो price भी बढ़ेगा. I think that is very, very, very important. Now let us look at this company. Okay. Let us look at this company. Is this company doing a good job or a bad job? 1, 7, 49 and so on. From even if you look at here also, whichever time frame you want to look at, this company has done a fantastic job in the last 4-5 years, right? From 1 crore to 49 crore, all-time high operating profits, all-time high net profits. Let's check what happened to price. Let's check what happened to price. Yes, the price increased as well, right? From 30 rupees to whatever, 600 rupees. Again, a very good job being done by the company, right? So I hope this is clear that we have to somehow find companies which are constantly increasing profits. Harish bhai, the name is KP Energy, right? So one thing is clear that we have to find companies which are increasing profits and which will continue to increase profits in the future, right?
So I think let us come to one very important learning of this class, which is I want profit uptrend, right? Can we write this line down in the chat window? Because this is the most important line in investing. I want profit uptrend. I want profit uptrend. I want profit uptrend. I want profit uptrend. I want profit uptrend, right? Profit uptrend, simple 10 numbers actually tell you a big story. If you see 10 increasing numbers, it's a good company, typically. If it's not, if the numbers are not increasing, it's not a good company, right? Profit बढ़ेगा, तो price बढ़ेगा. Profit नहीं बढ़ेगा, तो price भी नहीं बढ़ेगा, right? As simple as that. Now let us look at one more example, okay? Tell me about this company. Is this company a good company or a bad company? Is this company a good company or a bad company? A loss of it has never made a profit in its entire life. Would you want to buy this company? Yes or no? No, right? It is not increasing profits, which is not a good thing. Making losses is a bad thing, right? As simple as that. Okay, let's look at another company. Is this a good company or a bad company? Sorry, good company or a bad company? Bad, right? Loss making is not a good thing. Making losses is a bad thing. It's simply a bad company. So I think we have almost figured out that बेसिक तो हम बता देंगे कंपनी अच्छी है बुरी है, वो तो हम देखकर बता सकते हैं, राइट? नंबर्स देख के 2 मिनट में आइडिया लग जाता है. इन 2 minutes you can actually glance the numbers and say if it's an average company or a bad company or a good company, right? 2 मिनट में नंबर देख के आइडिया हमें लग पा रहा है कि भाई किस टाइप की कंपनी, राइट? नाउ वन मोर क्वेश्चन. There's a company A which 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 will increase its profits from 1 crore to 20 crore in 5 years. And there's a company B which will increase its profits from 1 crore to 200 crore in 5 years. Which company will you buy? Which company will you buy? Company A is 1 crore to 20 crore. Company B is 1 crore to 200 crore. Company B, right? Because company B is increasing profits faster. So what is our job? Find companies जो तेजी से प्रॉफिट बढ़ाएंगी. वो कंपनियां ढूंढनी है जिनका प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा. प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा तो प्राइस तेजी से बढ़ेगा. प्रॉफिट धीमा बढ़ेगा तो प्राइस धीमा बढ़ेगा. प्रॉफिट गिरेगा तो प्राइस गिरेगा. अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा तो प्राइस तेजी से बढ़ेगा. प्रॉफिट धीमे से बढ़ेगा तो प्राइस धीमे से बढ़ेगा. प्रॉफिट गिरेगा तो प्राइस गिरेगा, right? So that I think basics are very, very clear for all of us that we have to find profit uptrend companies, and we sort of understand this line very, very well. This line has to be memorized. Okay, ये सपनों में आनी चाहिए. Dreams you should, if you are an investor, right? This is like a no-brainer line that you want profit uptrend. If your company is not getting profit uptrend, it's a bad company. कोई भी खरीद ले, आपको वो कंपनी बुरी ही रहेगी. कंपनी का काम है प्रॉफिट बढ़ाना, and you have to buy profit uptrend. Okay. Now, another important line, I will stay away from loss-making companies. Another very important line, I will stay away from loss-making companies. 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 Can we all write this down in the chat window as well? कि नुकसान से हमें दूर रहना है. Simple logic. Profit making companies की कोई कमी नहीं है. हम नुकसान की कंपनी में पैसा नहीं लगाएं. नुकसान हमें पसंद नहीं है, right? So can we all write this down in the chat window as well? I will stay away from loss-making companies. 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 Right? So I hope all these lines are very, very clear. It's not tough. It's very clear so far. Is it tough so far? Is investing tough so far? Is the concept of profit uptrend tough to understand? I hope not. It's not a tough concept. Profit बढ़ना है, इसका simply याद करना, ठीक है? Now,
there are three types of businesses. Okay. One, a evergreen business, which does not depend on the month of the year. There's something called a seasonal business, which depends on the month of the year. And there's something called a cyclical business, which I will explain later. Okay. Okay, one question for everyone. Pepsi. Is Pepsi sold more in summers or in winters? गर्मियों में बिकती है ज्यादा, सर्दियों में? Pepsi. Summers, right? Does anyone feel that Pepsi sold more in winters? सर्दी में सब बोलते सर्दी लग जाएगी, पेप्सी मत पियो, right? Parents would say that, right? So Pepsi sold more in summers. So Pepsi is a proper seasonal business. Okay. There's a company which makes शादी के कपड़े. शादी के कपड़े. Is it a seasonal company or a evergreen company? शादी के कपड़े seasonal होंगे, evergreen होंगे. Do we have a शादी season in India? Yes or no? Yes, we do have a शादी season in India, and therefore शादी के कपड़े शादी के सीजन में ज्यादा बिकेंगे. Okay. ग्रोसरी शॉपिंग, राशन खरीदना, राशन की कंपनी या किराना की कंपनी जो किराना बेचती है, डीमार्ट जैसे, एवरग्रीन होगी, सीजनल होगी? क्या आप सर्दियों में ज्यादा किराना खरीदते हो, गर्मियों में, या दोनों में बराबर? It's equal, right? We buy equal grocery in summers and in winters, right? So therefore DMart is a proper evergreen company. Okay. A company is setting up clean energy plants. Clean energy plant setup करती है कंपनी. एवरग्रीन होगी कि सीजनल होगी? क्या प्लांट ज्यादा, हाँ एवरग्रीन होगी, ऐसा कुछ नहीं कि सर्दियों में ज्यादा प्लांट लगेंगे, गर्मियों में लगेंगे. एक चीज होगा कि भाई जब बारिशें आती हैं, प्लांट्स आने में दिक्कत होती है, तो ये बारिश आ रही होगी, लोग काम कैसे करेंगे ना, प्लांट कंस्ट्रक्शन वर्क में थोड़ा दिक्कत आ जाता है. तो सेकंड क्वार्टर में थोड़ी सी सीजनलिटी आती है, जहाँ पे भी काम करना है, जहाँ पे भी बाहर, आप रेजिडेंशियल कंपनी ले लो, इंफ्रा कंपनी ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, जहाँ पर भी बाहर सड़क पे काम करना है, उसमें थोड़ा सीजनलिटी सेकंड क्वार्टर में आ जाता है, क्योंकि बारिशें हो जाती है इंडिया में. ठीक है. सो थोड़ा सा सीजनलिटी रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा. अभी इसको ना एग्जाम्पल से देख लेते हैं. ठीक है. तो ये कंपनी है, पेप्सी की बॉटल्स बनाती है. पेप्सी की जो कांच की बॉटल होती है ना, वो बनाती है. कैन वी सी अ सीजनैलिटी इन द जून क्वार्टर? कैन वी सी अ बिग जंप इन सेल्स इन द जून क्वार्टर? 3893 से 5611. कैन वी सी अ बिग जंप इन द जून क्वार्टर? Can we see a big jump in the June quarter here also, in 22 also? Right? Why don't we see a big jump in this quarter? Why don't we see a big jump in 21? Why don't we see a big jump in 21? This was the second COVID wave. So this was the second COVID wave. Therefore, we don't see a big jump. Otherwise, we will always see a big jump. Okay. Next year for this company, will June be higher than March? Next year for this company, will June be higher than March? Yes or no? 99.9% yes. Okay. Will September be lower than 5611? Will September be lower than 5611? Yes or no? Probability wise. आप इस कंपनी के नंबर बता सकते हो कि भाई कम आने वाले हैं. आपको पता है, नो रॉकेट साइंस, अगला सितंबर में नंबर कम आने वाला है. गारंटी से बोल रहा हूँ, नंबर कम आएगा. गारंटी कुछ नहीं है, 99% चांस. 1% तो फिर भी हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए, ऐसा हो सकता है कंपनी डबल कर दे सेल्स को, बट चांस बहुत कम. राइट? सो it's very evident that the next quarter will be a bad quarter for this company. Okay. Very clear seasonality visible. Right? Let's look at this company. वेदांत फैशन शादी के कपड़े बनाती है. ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली and अनुष्का शर्मा. Someone is saying it didn't happen in June, September 2020. COVID is the answer. COVID के वजह से नहीं हुआ. Okay. Does this company have a seasonality in the December quarter? शादियां कब होती हैं? दिसंबर और जान फेब मार्च में सबसे ज्यादा होती है. Can you see a clear seasonality here? Very, very clear seasonality. Right? Very, very clear seasonality. दिसंबर बढ़ गया, मार्च कम हो गया.
फिर से अगले साल दिसंबर बढ़ेगा, मार्च कम हो जाएगा। इस साल भी दिसंबर बढ़ा था और फिर मार्च कम हो गया। तो दिसंबर हमेशा इसका बढ़ा हुआ आएगा, चाहे आप कुछ भी देख लो, हमेशा। ठीक है, तो ये प्रॉपर सीजनल बिजनेस। आप डीमार्ट देख लेते हैं, क्या आपको सेल्स फ्लक्चुएटिंग दिख रही है? इज द सेल्स फ्लक्चुएटिंग ड्रामेटिकली अक्रॉस क्वार्टर्स? बहुत ही स्टेबल है, सेल्स में कोई फ्लक्चुएशन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो क्लियरली इसमें सीजनैलिटी ज्यादा नहीं है। I hope that is very clear to everyone that seasonality is not that high in this kind of a business, right? Is it clear to everyone that seasonality is not that high? Yes, right? Okay, let's take another example. Okay, green energy plant लगाती है कंपनी, प्लांट सेटअप करती है। कैन वी सी सीजनैलिटी? क्या बहुत चेंज हो रहा है सेल्स में अक्रॉस? वो काफी स्टेबल कंपनी है, सेल्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है। नो सीजनैलिटी ऑब्जर्व्ड इन दिस काइंड ऑफ अ कंपनी एज वेल, जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है, राइट? सो सीजनल बिजनेस में सेल्स फ्लक्चुएट करेगा, नॉन सीजनल बिजनेस में सेल्स स्टेबल रहेगा, इतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ वी लुक एट सम अ थर्ड काइंड ऑफ कंपनी कॉल्ड साइक्लिकल। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन, सेल। ओके, सेल मेक स्टील, लोहा बनाती है, राइट? लोहा। ओके, जब आपके घर में लोहा आता है तो डू यू क्वेश्चन कि टाटा स्टील का है कि सेल का है कि किसका है? या लोहा इज मोस्टली लोहा, बहुत डिफरेंस नहीं होता, राइट? Steel is mostly steel. It is not that differentiated. But Apple and Oppo, they are very different, right? Apple का प्रोडक्ट बहुत महंगा रहेगा, Oppo का इतना भी महंगा नहीं रहेगा, right? Similarly, brands can significantly differentiate. Commodities can't be differentiated that much, right? So, in this kind of a company, right, which is a commodity company, the operating profit margin percentage is variable. If you look at these numbers, right, the operating profit margin percentage in a commodity company is variable. Can you see the operating profit margin was 30% here and 3% here and 10% here? Can you see a very variable operating margin? Yes or no? Yes or no? Yes, this company has a highly variable operating margin. Okay, let's look at here also. Can we see a cyclical nature here? If I look at this, right, 13 was high, -7 कम हो गया, फिर 15 बढ़ गया, फिर कम हो गया. Can we see a cycle, right? This company will always have cyclical margins. It will not have stable margins. Okay, it's a proper cyclical because the margins are volatile. Now let us look at this company. Okay, is this company a cyclical company? Is this company a cyclical company? Are the margins highly variable? Yes or no? Are the margins highly variable? Yes or no? No, right? Okay, what will be the margin percentage of this company in the next quarter? In the September quarter, what will be the margin percentage of this company? Can you tell? Someone is saying 19, 19, 20, 18 to 20. You have guessed it, right? You have guessed it already. What will be the margin percentage of this company? Okay. Now, guess the margin percentage of this company. Can you guess the margin percentage of this company? What will be the next number? What will be the next number here? Can you guess easily? Someone is saying, most people can't guess. मैं भी guess नहीं कर सकता. Very difficult to guess the number for the next number for this company, right? So cyclicals are very hard to predict because their operating margins are volatile. Cyclicals are hard to predict because their operating profit margins are volatile, right? Evergreens are easier to predict because their operating profit margins are very stable.
I hope that is very clear, right? Evergreens are easy to predict. Cyclicals are hard to predict, right? Let's look at DMart. Can you tell me the DMart the operating margin next quarter? What will be the operating margin of DMart next quarter? Somewhere around 8 to 10%. Somewhere around 8 to 10% मोटा मोटा. It's fairly easily guessable. 8 to 10 का number रहेगा. ज़्यादा fluctuate नहीं करता है. If I look at these numbers, right, yearly देख लो, it's very, very stable. Right? Okay. Which would you want to be the owner of a stable company or an unstable company? Would you want to be the owner of a stable company or an unstable company? Anyone who would want to be the owner of an unstable company? कि पता ही नहीं भाई कंपनी में क्या चल रहा है, भगवान बताएंगे आगे की क्या चल रहा है. Logically, everyone wants to be the owner of a stable company where profits are predictable, right? कि भाई कुछ क्या होगा, मोटा मोटी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, right? So therefore, we must figure out stable companies and not unstable companies. Let's look at this company. Okay. Is this a stable company or an unstable company? Stable company or unstable company in terms of operating margins? Is it a stable company or an unstable company? 16, 8, 6, 17, 22, 23, 6, 8, 10, 11. It is not stable. It is very unstable, right? पर कभी भी कुछ भी नंबर आ जाता है. कभी भी कुछ भी नंबर आ रहा है, right? In this company, very, very unstable. I can see a number 6 also. I can see 22 also, right? Very, very unstable. Compare this with DMart, let's say. DMart के देख लेते हैं. DMart के numbers दे रहे. Very, very stable. So, very, very unstable company. A very, very stable company because it is because the numbers are very, very stable, right? So we have to prefer stable companies over unstable companies, right? Okay, so I hope this is very clear. Now, all commodity products like steel, copper, paper, sugar, they're all proper cyclicals. Anything which is transformer, grocery, green energy, electric vehicle are very stable structural businesses. And seasonal वाले तो Pepsi हो गया, Carnival हो गया, and so on and so forth, right? So these are proper seasonal businesses. We should preferably invest in evergreens and seasonals, not in cyclicals. Okay, someone is saying, what is the reason behind cyclicality? Okay, तो एक हमारी दुनिया में 1000 स्टील की फैक्ट्री है. एक बड़ी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 999 छोटी फैक्ट्री है. फैक्ट्री बंद हो गई अचानक से. स्टील के प्राइस को क्या होगा? अचानक से वो बहुत बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई. स्टील के प्राइस को क्या होगा? स्टील का प्राइस भाग जाएगा, अचानक से मार्जिन बढ़ जाएंगे. आपने कभी ये देखा है कि एप्पल की फोन का प्राइस फ्लक्चुएट करता है कि भाई एप्पल के फोन का प्राइस आज 100 रुपए है, कल 200 रुपए हो गया. डबल हुआ है एप्पल के फोन का प्राइस अचानक से. क्या शॉर्टेज पड़ गई, प्राइस डबल कर देते हैं? नहीं होगा. वो स्टेबल रखेंगे हमेशा अपने प्राइस को. जहां पे प्राइस वॉलेटिलिटी है वहां पे साइक्लिकलिटी है. जहां पे प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं है वहां पे साइक्लिकलिटी नहीं है. आप घर में कागज देते हो, स्क्रैप कागज होते हैं ना, रद्दी जिसको बोलते हैं, उसमें पेपर का दाम पूछना, वो बहुत वेरिएबल होता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है. सो जहां पे प्राइस वॉलेटाइल है वो साइक्लिकलिटी है वहां पे. जहां पे प्राइस स्टेबल है वहां पे साइक्लिकलिटी नहीं है. सो आई होप दैट इज क्लियर. wherever prices are volatile, cyclicality is there. मोबाइल फोन से प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं होती है. ग्रोसरी में प्राइस वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती है. तो therefore they will be far stable businesses than cyclical businesses, right? So our job is to find evergreens and seasonals and not cyclicals, preferably evergreens, right? So can we write this down? Capital goods are evergreen, mostly evergreen. You're right. I love evergreen and seasonal, don't like cyclical. I love evergreen and seasonal, don't like cyclical. I love evergreen and seasonal, don't like cyclical. Can you write this down? I love evergreen and seasonal,
don't like cyclical. I love evergreen and seasonal, don't like cyclical. Can we write this down in the chat window? See, I ask people to write down because उससे retention अच्छा रहता है. Well, I would tell you by the way I would study, right? I would write the same thing 100 times. That retention was very good, right? I'll tell you, I remember I memorized D block elements and I was in school, right? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, ferrous, cobalt, nickel, copper, zinc. So once you write it down, you memorize them, right? So that is why writing helps in memorization, and therefore it is very important, right? If you have people who write a lot, they memorize a lot as well because the dimag mein ghus jata hai. And that is why I always ask people to write because you memorize that, right? So I love evergreen and season, don't like cyclical, right? So I hope this is very clear that we should prefer stable businesses over unstable businesses, right? So what have we learned so far? Profit uptrend, we have learned so far. And second thing, we have learned that we like evergreens and seasonals and we don't like cyclicals, right? Now, let us go to the third topic, which is valuation. Okay. Let's say you go to a shop, right? आपको सब्जी खरीदनी है. You want to buy sabzi. Okay. Let's say you want to buy potatoes. And the shopkeeper says that potatoes are worth 10,000 rupees per kg. 1 kilo का 10,000 रुपया. Will you buy it? Yes or no? Will you buy potatoes at 10,000 rupees per kg? Yes or no? Why would you not buy at 10,000 rupees per kg? Why would you not buy 10,000 rupees per kg? It is not worth that money, right? I think that's the simple answer. It is highly priced. Okay. So very clearly, every economic asset has a fair price. Okay, another question. You go to a diamond store, solitaire diamond खरीदना है आपको, ठीक है? You want to buy a solitaire diamond and you're getting it for 10 rupees. Genuine diamond solitaire, 10 rupees. Will you buy it or not? Will you buy it or not? Genuine solitaire diamond at 10 rupees. Obviously, yes, because it is very, very cheap, right? 10 रुपए में कौन solitaire diamond बेचता है, right? Obviously, it is, मतलब 10 खरीद लेंगे यार, 10 रुपए में क्या पूरी दुकान खरीद लेंगे, right? So obviously, if you are getting an asset at a very cheap price, you will want to buy it. If you are getting an asset at a very expensive price, you will not want to buy it, right? Now, diamond prices, we understand. Potato prices, we understand. Stock prices, we don't understand, right? Now the next question is, how do we understand stock prices? If a stock is expensive or is it cheap, we don't understand, right? So how do we establish if a stock is cheap or expensive, right? The way to do that is something called a price to earnings ratio. Price to earnings ratio tells you if a stock is overpriced, fairly priced, or underpriced. What is price to earnings ratio? Price to earnings ratio is a measure or metric which tells you about the future growth of a company. If the expected future growth is high, P will be high. If the expected future growth is low, the P will be low. Okay. If the P of a company is less than 10, market is expecting no growth. If a P of a company is between 10 and 30, market is expecting moderate growth. If the P is between 30 and 60, market is expecting high growth around 10%. If the P is more than 60, market is expecting very high growth, right? Okay. Can I say that a company
which is growing at 50% per annum is a diamond. Can I say that? In my example which I give, right? Can I say that a company which is growing at 50% per annum is a diamond? Yes or no? Yes. 50% growth nahi hota hai आसानी से, right? If you get a diamond at 10 ka P ratio, will you buy? Yes or no? If you get a diamond at 10 ka P ratio, will you buy? Yes or no? Okay. If you get a diamond and okay, let's say you are buying a low growth company, okay? A low growth company at a 60 P ratio, will you buy? Yes or no? Low growth company at a 60 P ratio, will you buy? Yes or no? Never, right? Okay. Will you ever buy a low growth company? Will you ever buy a low growth company? I would not, because I want to be the owner of a fast profit growth company. I would never buy a low growth company, whatever be the price. I want fast profit growth companies. As simple as that. Okay. So, low P and low growth, I don't want to buy. Low growth and high PE, I again don't want to buy. Low PE and high growth is what I love. Low PE and high growth. And high PE and high growth, it is a fairly valued company. I typically don't want to buy it, but I can buy if the growth is very fast. So low PE, high growth is multi-bagger. High PE, high growth is question mark. समझना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है. Low growth companies, whether it be high PE or low PE, we should not buy. Right? I hope that is clear. Low growth companies, whatever be the price, we are not buying. High growth companies, if the P is low, it's a no-brainer. High growth companies, if the P is high, we are confused. Right? So that is how we think about the valuations part. Okay. Now let us make it very real and practical. Okay. 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 Is this company a low growth? Is this company a slow growth company or a fast growth company? Is this company a slow growth company or a fast growth company? What is the percentage of high growth? Anything which is growing more than 30% year on year is fast growth. 100% is super fast growth. Is this company slow growth or fast growth? 1, 7, 21, 44, 49. ये 3 महीने का नंबर है, मेरा टीटीएम है ये. तो आप 49 को चाहो इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये तो पूरा साल खत्म नहीं हुआ है. तो 1, 7, 21, 44 इफेक्टिवली ये नंबर्स हैं. इट्स अ सुपर फास्ट ग्रोथ कंपनी. 1 से 7, 7 से 21, 21 से 44, 44 से 49, ये 3 महीने का है, अभी पूरा साल नहीं हुआ है. सो इट इज अ टीटीएम नंबर. ये थोड़ा ध्यान में रखना है, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रहा है. ओके. If you get the chance of buying this company at a 10 P ratio, will you buy? 10 P ratio पे, will you buy? Yes or no? Will you buy this company at a 10 P ratio? Yes or no? Yes. Okay. Now I'll show you a very interesting thing. Okay. So, okay. KP Energy, right? This company, which we saw right now, right? This company, KP Energy, in case of quarter, what will be her percentage of high growth? 10-20% is high growth. Or 10-20% quarter on quarter is pretty high growth. 10-20%. Okay. So this company on 22nd May, KP Energy was available at 10 ka P ratio. So this company actually was available at 10 ka P ratio, and people actually purchased this company at 10 ka P ratio, and see what happened after that. This is the time of 10 ka P ratio, and the stock jumped from 200 to 550. Can you see stock market jumping on this company? How badly we will jump on this company, right?
10 को यहाँ पे 10 था, राइट, एंड इट इज 550 राइट नाउ. 200 से 500 का प्राइस हो गया 2 महीने के अंदर. एंड दिस कंपनी actually had a 10 ka P ratio. And this is Sovrenn Times. So we covered this company in Sovrenn Times as well. And you can see it had a 10 ka P ratio. Had you been aware of this company on 22nd May, would you have purchased it? Yes or no? Were you aware about this company on 22nd May? Yes or no? Were you aware about this company on 22nd May? Yes or no? Can you write yes or no? No, because mostly ये information पे आता नहीं है. So I think Gulshan Bhai is writing yes, but you have to be aware of these companies, right? The more aware you are, the better decisions you can take. Okay. It is all about information. I always keep on saying investing is you have to keep your eyes and ears open, and you have to like keep on searching for these companies. So many undervalued opportunities are out there in the market. Okay. Okay. So I hope this is very clear that this was a good buy. Okay. Another question. Is this a slow growth company or a fast growth company? 1, 8, 15, 25. Slow growth company or a fast growth company? So Vinayak Bhai saying fast growth, Kepal Bhai saying fast growth, Ahmed Bhai saying fast growth, Akshay Bhai saying fast growth. So yes, this company is a clearly fast growth company. Would you buy this at 20p ratio? Would you buy this at 20p ratio? Yes or no? 20p ratio. And guess what? This company was available at 24 ka P ratio. We can check here. This company was available at 20 ka P ratio in February. And it ran up like crazy. 20 ka P ratio tha, and it ran up like crazy. Right? So proper, it ran up a lot, and clearly it was an underpriced company at that point of time. Right? Okay. Another example. Let's look at this company. Slow growth, fast growth. So slow growth, fast growth. Slow, fast. Fast, right? Would you buy this company at 15 ka P ratio? 15 ka P ratio. Yes. Okay. Let's check this company. If I look at the headlines for this company, right? It was available at 15 ka P ratio some time back. I think देख लेते हैं. ठीक है, फिर तो 30 का है. 26.7. See, you can see this at 19 ka P ratio. Can you see? This was available at 15 to 20 ka P ratio on May 23. Okay, and this company ran off as well, right? So I hope we understand that we have to buy good assets at good prices. Now, see, this is a very rudimentary valuation understanding. Okay, what we have learned in the class so far is a very rudimentary valuation understanding. In valuations, इसमें बहुत in-depth होता है, which we will cover in the advanced class. Okay, we'll cover that in the advanced class. In case you want to do the advanced class before itself, so what you can do is, I'll actually just 1 second. So I think just give me 1 second. So of course there will be people who would want to do this advanced class also fast, right? And not wait till the end, not wait till next week, right? In case you want to do advanced class, you can actually subscribe to the channel, and you can find advanced class here also, and you can also find it on the Sovrenn website. Okay. Yeah. So I think that's the important learning, that we have to buy company at a good valuation. And can we write this down? I will buy at good PE. I will buy at good PE. And what is good? Less than 30 is typically good. Less than 30 is typically good. Can we all write this down? I will buy at good PE.
I will buy at good PE. I will buy at good PE. Less than 30 is typically good. Okay, one more question. There's a good fast growth company available at 30 PE. 30 पे खरीदोगे? 30 पे वो फेयर प्राइस होगी. फेयर प्राइस में भी खरीद सकते हैं. लॉजिकली हम एक एसेट को या सस्ते में खरीदना है या फेयर प्राइस पे खरीदना है. We have to buy either at a low PE or at a fair PE. We don't have to buy at a high PE. High overpriced नहीं खरीदना है. Underpriced asset or fairly priced assets we can buy. Overpriced we should not ideally buy. I hope that is clear. Prefer buying underpriced and fairly priced assets and not overpriced assets. Right? So I hope that is very clear that we must buy underpriced or fairly priced assets. उसके सेक्टर वाइज भी होगा. वो सी वैल्यूएशन अभी बहुत बेसिक हमने सीखा है. एडवांस्ड हम अगले हफ्ते सीखेंगे. ओके. सो वी हैव लर्न 3 थिंग्स सो फार. प्रॉफिट अपट्रेंड must be there in the company. Preferably evergreen company and a good valuation. These 3 things we have learned so far. Okay. How is the session been so far? Is it tough or easy? Is the session tough or is the session fine? Is investing tough or easy? Right? And for those who are beginners, right? I think anyone who's a big Priyanshi, you are a beginner, right? So are you able to understand this? Someone is asking कौन सा प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग या नेट प्रॉफिट दोनों देखना है. दोनों देखेंगे. टिपिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट प्रोपोर्शनल रहते हैं. एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है. दोनों देखना है, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों. ठीक है, एक नहीं देखना है, दोनों देखना है. ठीक है. So I hope this is clear so far. Someone is saying, should we also not look at free cash flow? Okay. If the promoter is genuine and अगर आप प्रमोटर पे भरोसा करते हो तो आई डोंट थिंक यू शुड चेक फ्री कैश फ्लो. फ्री कैश फ्लो तब चेक करने जब हमें देखना है भाई प्रमोटर फर्जी बना कर सकता है. 98% promoters are not फर्जी in the Indian stock market. Someone is asking शेयर कैपिटल क्या होता है. राम अख्तर भाई उसको आप इग्नोर कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता शेयर कैपिटल से, आप छोड़ दीजिए. आपको पढ़ाना होगा मैं स्पेस में बता दूंगा, बट उसकी जरूरत नहीं है इन्वेस्टिंग. आप सोच लीजिए मैं भी भूल, आप मतलब मैं खुद भी भूल चुका हूँ एक्चुअली कि शेयर कैपिटल क्या होता है. मुझे पढ़ाया गया था टाइम में, मैंने बोलने की कोशिश करी, जरूरत नहीं है. राइट, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल. राइट. Yeah. So I think one question someone is asking ki yeah, someone was asking ki bhai low P means low market growth. Low P means that market is expecting no growth, but sometimes markets can be wrong. They can give a low P to a high profit growth company. That is where mispricing has happened and we have to catch that. Market is not always right. In the short run, market can be wrong and we have to find those opportunities where market is wrong. If the market is selling me a high growth company at a low PE, I will buy it. If they're selling me a low growth company at a low PE, I will not buy it. So market can be wrong in the short run. In the long run, they're never wrong. In the short run, they can be wrong. They can sell a high growth company at a low PE ratio. So therefore, we have to find the mispriced opportunities in the market and make money. Okay. How to know about promoters is a question. If you are the owner of a company and you loved your company, would you own a high stake or a low stake? आप अपनी कंपनी के मालिक हो और आपको कंपनी से प्यार है, आपका स्टेक हाई होगा लो होगा. आप पूरी कंपनी दूसरों को बेच दोगे कि अपने पास रखोगे? Logic. What does logic say? Would you have the high chunk of your company or would you have a low chunk of your company? High chunk, right? So 75% अगर होल्डिंग है, 60 के ऊपर I consider very good. Prefer promoters who have high holdings. Okay. Now, promoter is selling to the public. Is that a good thing or a bad thing? Promoter is selling his stake to the public. Good thing or a bad thing? It is a bad thing because promoter अपना माल क्यों बेच रहा है हमें?
कौन सा अच्छा प्रमोटर अपनी कंपनी बेचता है, राइट? Promoter selling to the public is not a great thing. It's a bad thing. Promoter buying from the public, is that a good thing or a bad thing? Promoters logic of investing is promoter buying is actually a good thing, right? Yeah. So no, so I think someone is asking कि भाई short term investing short term नहीं होती, investing long term होती है. You always have to buy profit uptrend companies at good valuations. अगर हमें मल्टी बैगर चाहिए तो हमें थोड़े अच्छे पीस पे लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न्स टिपिकली अच्छे आ जाते हैं. Anyway, so I hope this is clear. Now the next topic is how to predict the future. Okay, the next topic is how to predict the future, which we will learn after a break. Okay, who here wants to predict the future? कौन है जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहेगा? Who here wants to predict the future? So let us learn how to predict the future after this session. ठीक है? After the break. So I'll be back in like 3-4 minutes, and then we'll predict this. ठीक है? Okay. So can we start again? Can we start again?
Perfect, perfect. So I think we talk about the next thing, which is how to predict the growth. Okay. Growth prediction is actually done through information. Okay. Before we start that, one more question. Okay, let's look at this company. Okay. Let's look at this company. Just by sheer numbers and nothing else. Say numbers say 1, 8, 15, 25. Okay. What would be the 2024 profit of this company? Just by sheer numbers and nothing else. 1, 8, 15, 25. What would be the FY24 number of this company? Just looking at sheer numbers and nothing else. Can you predict? Just by sheer numbers. Someone is saying 37. Someone is saying 35. See, I would say 15 to 25 हुआ है, 60% बढ़ा है, 60% increase here, maybe 40% over here. So 35 is a pure number guess. अगर मुझे सिर्फ number guess करना हो, just by looking at this, I would have guessed 35. Right? Someone is saying P is too high. Obviously, P is too high. अभी तो मैं भी नहीं खरीदूंगा. But I can predict future just by looking at numbers. But that's a very rudimentary way of guessing. Let us look at a smart way of predicting future growth. Okay. So let us go to this slide, which is how to predict the future. And this prediction is done through information. The first type of information is called fundraising information. Now, why would a company raise funds? Why would a company raise funds? Can you answer? Someone is saying capacity expansion. Expansion, Harish Bhai is saying, to expand, to diversify. Yes, a company raises funding for expansion. Okay. What are the ways of expansion? The first way of expansion is called preferential equity allotment. Okay. What is preferential equity allotment? It is a way of raising funding. And how do we explain that? The first word is preferential, which means that preference is given to someone. The second word is equity, which means shares. The third word is allotment, which means dena. तो आपने किसी preferred बंदे को shares दे दिए. You gave a preferred person some shares in exchange for money. Subhash Chandra Bose once said, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. In preferential equity allotment, what it means is that तुम मुझे shares दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा. Okay, that's how the transaction happens. तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें shares दूंगा. तुम मुझे shares दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा. That's what the investors say for preferential equity allotment. Okay, in preferential equity allotment, the investor gets new shares and the company gets money in the bank account, which the company can use for expansion. Okay, so now, is preferential equity allotment a good thing or a bad thing? Is preferential equity allotment a good thing or a bad thing? Yes, it is a good thing because the company is getting money and the investor is getting shares. Okay, it is never a bad thing. It is always a good thing. Preferential equity allotment is always a good thing. Now there's something called preferential convertible warrants. What is convertible warrants? In convertible warrant, 25% money is paid upfront and 75% money is paid later. It is similar to preferential equity allotment. The small difference is that preferential equity में सारा पैसा पहले देना पड़ता है. Preferential warrant में 25% पैसा पहले देना पड़ता है, 75% बाद में देना पड़ता है. Shares तब मिलते हैं
जब पैसा पूरा दिया जाता है। समवन इज आस्किंग, प्रेफरेंशियल इक्विटी में प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेचता, प्रेफरेंशियल इक्विटी में नए शेयर्स क्रिएट हो जाते हैं हवा से। प्रेफरेंशियल इक्विटी में प्रमोटर अपना शेयर नहीं बेचता है, नए शेयर क्रिएट कर देता है। इट इज नॉट स्टेक सेल। जब प्रमोटर अपना शेयर बेचता है वो बुरी बात होती है, प्रेफरेंशियल इक्विटी अच्छी बात होती है, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आता है और वो शेयर नए शेयर होते हैं। दो चीजें होती है यहाँ पे। जब प्रमोटर स्टेक बेचता है तो प्रमोटर के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। जब प्रमोटर प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट करता है, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। प्रमोटर के बैंक अकाउंट में पैसा जाना इज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर द कंपनी। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा जाना इज अ ग्रेट थिंग फॉर द कंपनी। So preferential equity allotment is typically a good thing for the company. Preferential convertible warrants is a EMI on preferential equity allotment. 25% पैसा पहले, 75% पैसा बाद में। ठीक है, both are good things for the company. Third thing is rights issue. Rights issue में the word preferential is not there. So therefore no preference is given to anyone. Rights issue में क्या होता है? कॉलेज में पार्टी होती थी, राइट? कॉलेज में पार्टी होती थी, सब बच्चे मिलकर पैसे देते थे, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज राइट्स इशू। कि भाई कंपनी में पार्टी चल रही है, सब शेयर होल्डर मिलकर पैसा दे दो। कि भाई सब शेयर होल्डर मिलो, जिसका जितना हिस्सा है उसके हिसाब से पैसा दे दो, राइट? जब कॉलेज में पार्टी होती तो ये होता था कि एक बंदे ने ज्यादा खाया, वो हमेशा बोलेगा कि भाई मैं, मतलब दूसरे उसको बोलेंगे तूने ज्यादा खाया तो तू ज्यादा पैसा दे। सिमिलरली होता है, जिसके पास ज्यादा हिस्सा है वो ज्यादा पैसा देता है, राइट्स इशू। जिसके पास कम हिस्सा है वो कम पैसा देता है। सारे शेयर होल्डर पैसा देते हैं कंपनी को। दैट्स अ राइट्स इशू। इज दिस क्लियर? इज प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल कन्वर्टेबल वारंट एंड राइट्स इशू क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ऑल थ्री आर फंड रेजिंग इक्विपमेंट्स। तीनों से पैसा इकट्ठा होता है। प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट में किसी को प्रेफरेंस मिलता है, प्रेफरेंशियल कन्वर्टेबल वारंट में भी किसी को प्रेफरेंस मिलता है, राइट्स इशू में किसी को प्रेफरेंस ही मिलता है। अच्छा, एक कंपनी है जिसमें और मैं और मेरा एक फ्रेंड है आदित्य, एंड लेट्स से हिज फ्रेंड रतीश। हम दोनों की कंपनी है। मेरे पास 70% है, मेरे पास 30% है, उसके पास 70% है। अब हम राइट्स इशू करते हैं तो क्या होगा? लेट्स से राइट्स इशू में हमें 100 करोड़ रुपए रेज करने हैं, तो मैं दूंगा 30 करोड़, वो देगा 70 करोड़ और 100 करोड़ रेज हो जाएगी। ठीक है, अब हम तीन दोस्त हैं, मैं, रमेश, सुरेश। मेरे पास है 30, रमेश सुरेश के पास है लेट्स से 35। 100 करोड़ रुपए रेज करने हैं, मैं दूंगा 30 करोड़, रमेश सुरेश दोनों देंगे 35 करोड़ ईच। तो समझ गए, जितना हिस्सा उतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज राइट्स इशू। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। प्रेफरेंशियल इक्विटी में क्या होगा? लेट्स से आपकी कंपनी है और मैं इन्वेस्टर हूं, तो आप मेरे से पैसे मांगोगे कि आदित्य पैसे दे दो मेरी कंपनी के लिए। तो मैं आपको लेट्स से मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए, तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर द 5 करोड़, ये लो शेयर इन रिटर्न। तो आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए चले जाएंगे और मेरे पास शेयर के हिस्से आ जाएंगे। ठीक है, राइट्स इशू, इज इट नॉट गिवन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स? थोड़े डिस्काउंट पे इशू होता है राइट्स इशू। राइट्स इशू में स्टॉक इज गिवन एट डिस्काउंटेड प्राइस, थोड़ा सा डिस्काउंट होता है उसका। ठीक है, राइट्स इशू में रिटेल भी भाग लेती है, करेक्ट करेक्ट। राइट्स इशू में देखिए, जो भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो एचएनआई हो, सब पार्ट लेते हैं, जिसकी कंपनी है, जो भी कंपनी का मालिक है। ठीक है, तो ये तीनों अच्छी चीजें होती हैं। राइट्स इशू करने में बहुत मेहनत लगता है, हर एक शेयर होल्डर से पैसे लेना बहुत मेहनत का काम है। तो कंपनी प्रेफर क्या करती है? प्रेफरेंशियल इक्विटी को प्रेफरेंस मिलता है कि भाई वो हो जाए तो अच्छी बात है, वो नहीं हो पाता तो कन्वर्टेबल वारंट का वो रहता है कि भाई वारंट से कर लो, वो भी नहीं हो पाता तो राइट्स इशू होता है। ठीक है, अब द सेकेंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज बिजनेस एक्सपेंशन इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाट इज कैपेसिटी एक्सपेंशन? कैपेसिटी एक्सपेंशन सिंपल है, कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। एक कंपनी थी, वो 1 करोड़ टॉफी बनाती थी, ठीक है, अब वो 2 करोड़ टॉफी बना रही है। सिंपल कैपेसिटी एक्सपेंशन। इस कैपेसिटी एक्सपेंशन अ गुड थिंग और अ बैड थिंग?
Is capacity expansion a good thing or a bad thing? Capacity expansion is a proper good thing. Obviously कंपनी की कैपेसिटी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, राइट? न्यू प्लांट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? न्यू प्लांट मतलब नया प्लांट लगाना, कि भाई नया प्लांट लगा देंगे. नया प्लांट कंपनी क्यों लगाती है? Why does a company put up a new plant? Simple expansion, right? So capacity expansion, new plant, very similar to each other, both for expansion. New products. अब लेंसकार्ट ने लेट्स से ईयर्स के लिए कुछ लॉन्च कर दिया, ईयर हियरिंग एड लॉन्च कर दिया, दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट, राइट? न्यू प्रोडक्ट से क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. तो न्यू प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड थिंग. द फोर्थ वन इज लार्ज ऑर्डर. लार्ज ऑर्डर क्या होता है? कि कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया. इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अ कंपनी गेट्स अ वेरी लार्ज ऑर्डर, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स अ गुड थिंग, राइट? कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है तो भाई अच्छी बात है, राइट? लास्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रमोटर चेंज इंफॉर्मेशन. प्रमोटर चेंज में क्या होता है? कंपनी के नए मालिक आ जाते हैं. ओके, एक कंपनी है, उसमें मुकेश अंबानी कंपनी को खरीद लेते हैं. कंपनी के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? मुकेश अंबानी अच्छे प्रमोटर है कि बुरे प्रमोटर है? कंपनी के लिए मोस्ट लाइकली अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं कंपनी को बड़ा करेंगे, राइट? तभी खरीद रहे हैं, नहीं तो नहीं खरीद, राइट? सो प्रमोटर चेंज इज ऑल्सो पावरफुल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हम इसको पढ़ते हैं कि भाई ये सब कहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगा. आपने इंफॉर्मेशन कभी देखी है? ये पहले सारी इंफॉर्मेशन आपने कभी देखी है? यस सर, नो? ये सारी इंफॉर्मेशन सॉवरेन के अंदर पड़ी होती है, ठीक है? सॉवरेन के अंदर देख लेते हैं. तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, नो? कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके, नाउ लेट अस प्ले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. Which company recently raised 125 crores of funding? Which company recently raised 125 crores of funding? Azhar bhai has said it correctly. It's Nikita Infra. Okay. Which company recently raised 350 crore rupees? 350 crore. 350 करोड़ रुपए. सोम डिस्टिलरी भी सही आंसर है, एंड पावर मेक भी सही आंसर है. ओके. Which company recently raised 70 crore rupees? 70 करोड़ रुपया किसने रेज किया है? 70 करोड़ रुपया. लालजी एंड अक्षय भाई सेड इट करेक्टली. अन्नपूर्णा स्वादिष्ट. ओके, अब हम जाते हैं अन्नपूर्णा स्वादिष्ट की कहानी सुनने. ओके, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट ने 70 करोड़ रुपया रेज किया है. क्या हम ये बता सकते हैं कि उसने रेज क्यों किया है? इसकी कहानी हमें जाननी है. कहानी ये है कि भाई कंपनी नया प्लांट लगा रही है. कैन यू सी द कंपनी नया प्लांट लगा रही है. नए प्लांट लगाने के लिए चाहिए पैसा, और वो कंपनी ने रेज कर लिया है 70 करोड़ रुपए. तो कैन वी अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द कंपनी की कहानी क्या है? कंपनी के पास है 70 करोड़ रुपया, कंपनी को लगाने हैं नए प्लांट, ठीक है? कि भाई द कंपनी सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. यहाँ पे भी इन्होंने सेम ही चीज लिखा है कि भाई हम नई फैसिलिटी लगाने वाले हैं. तरह नीचे लिखा हुआ कि भाई नई फैसिलिटी हमें लगानी है, मोटा मोटी, राइट? कि कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे तो पैसा चाहिए बेसिकली उसके लिए, ठीक है? ओके. विच कंपनी रेस्ड 18 करोड़ फंडिंग? 18 करोड़ रुपया रेज किया कंपनी ने. 18 करोड़. विच इज द कंपनी? 18 करोड़ रुपए. Rama Steel is the right answer, and also OK Play is the right answer. Both have raised 18 crore rupees. Okay. Which company has raised 96 crore rupees? 96 crore rupees. Lalji Bhai said it correctly. It's Capacity Infra Projects. Right? So I hope we understand कि भाई ये सारा information कहाँ पे आता है और इसको पढ़ना कैसे है. ठीक है? तो obviously सारी अच्छी बातें हैं, right? All this is good information.
these companies have money, they can potentially grow in the future. Okay, one question. एक कंपनी है, उसने फंडिंग रेज करी, क्या इससे गारंटी होती है कि बड़ी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा? क्या गारंटी होती है इससे? गारंटी नहीं होती. कैपेसिटी बढ़ा दी बट बायर नहीं मिला, तो भाई दिक्कत आ जाएगा. तो गारंटी कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि भाई ग्रोथ आ सकता है, गारंटी कुछ नहीं है. ठीक है, so I hope that is very clear. Nothing in the stock market is guaranteed. अगर गारंटी होता तो हर बंदा अपना घर बेच के वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो सब अपना घर भी बेच दो, पैसा लगा दो. बट नथिंग इन द स्टॉक मार्केट इज guaranteed, right? I hope that is very clear. Okay, now some more questions. Okay, and I am assuming there are some women participants also in the class, right? So can you answer as well? So the question is, which company got a 634 crore order? Which company got a 634 crore order? And I request women participants also to answer. So Sri Vardhini ji has answered Vishnu Prakash. That's the correct answer. Can others answer as well? Like which company? And iska to answer ho gaya kya? Okay. Which company got a 3088 crore order? 3088 crore order. The correct answer is J Kumar Infra, which Aguna Bhai, Karan Bhai both have answered. Right? Which company got a 14 crore order from Navy, Indian Navy? 14 crores order from Indian Navy. So Yash has answered it correctly, and so is Harish Bhai. It's WPIL, right? So all these orders help you predict the future better, right? And proper prediction हम next class में सीखेंगे. But if the order book of a company is strong, future does look bright, right? Okay, one question. एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट अपट्रेंड, जिसकी कंपनी but before we know price, action discovers the price, right? No, that is not correct. Okay, one question. एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू है 100 करोड़ रुपया, ठीक है, उसको 200 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो अब क्या होगा? एक 100 करोड़ की कंपनी है, उसको 200 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो क्या होगा? उसका प्रॉफिट डबल हो जाएगा. क्या एक दिन में कभी स्टॉक प्राइस डबल हो सकता है इंडिया में? हो ही नहीं सकता. तो प्राइस एक्शन डिस्कवरी सिर्फ 10-20% कैप्चर करती है. आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है, सिर्फ उस ऑर्डर का इंपैक्ट नहीं दिखाना है, ट्रेडिंग नहीं करना है. ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर. अगर एक कंपनी की ऑर्डर बुक आज स्ट्रॉन्ग है तो गुड चांस फ्यूचर में भी अच्छी रहेगी, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक बन जाता है अगर ऑर्डर बुक आज भी स्ट्रॉन्ग है. ऐसा नहीं है कि भाई हमें आज की ट्रेडिंग करना है, हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखना है. प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो हमारा बेसिकली प्राइस भी बढ़ता रहेगा. ठीक है, तो आई होप ये ऑर्डर बुक वाला भी क्लियर है. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स. Someone is asking, from where do you source this information? Is everything publicly available? Yes, everything is publicly available. हम रिसर्च करते हैं बट सारा पब्लिकली अवेलेबल होता है. हम तो कंपनी का ईपीएफओ डेटा भी निकाल लेते हैं. सॉवरेन के ईपीएफओ डेटा का भी एक्सेस है. मुझे ये भी पता है आज की डेट में किस कंपनी में कितने लोग हैं, कितने लोग को पीएफ मिल रहा है. इवन दैट डेटा सॉवरेन हैज और ये पब्लिकली अवेलेबल है. तो ईपीएफ डेटा भी हमारे पास रहता है. मुझे पता है कि आज की डेट में आदित्य विजन में कितने एम्प्लॉइज बैठे हैं. तो सॉवरेन इंफॉर्मेशन इज रियली नेक्स्ट लेवल. ये हमारा प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है. आई विल शो यू आवर प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन. कहां गया प्रोप्राइटरी वाला? या सॉवरेन प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन. तो ये सारा इंफॉर्मेशन फाइलिंग्स में भी नहीं है, ये सारा हमने ढूंढ ढूंढ के निकाला है. तो हम लोग तो ढूंढ ढूंढ के इंफॉर्मेशन निकालते हैं. आप ये देखेंगे, दिस कंपनी has the employee PF amount has actually grown at 30% CAGR. This information only Sovrenn knows and the Indian PF department knows and Aditya Vision knows. और ये publicly available है, public कोई यहाँ तक पहुंचेगी नहीं. तो we scan everything, every publicly available source of data जो भी है. लोग को ये करना बहुत मुश्किल है. I have a team which actually does that. So हमारे पास तो कंपनी के PF के अमाउंट का भी डेटा है. Even that data we have, right? That's the power of actually Sovrenn. मतलब we have like really high quality data so that people make good decisions, right? Have you seen this data anywhere else? Sovrenn का PF का data, have you seen this anywhere else?
Has anyone seen PF data anywhere else? Yes or no? Even the PF data we have actually, and that's a very public. चाहो तो आप भी ढूंढ सकते हो. But someone is asking, how can we use the PF data? Good question. If the number of employees has gone up 30%, what do you expect about the revenue? If the number of employees has gone up by 30%, can you predict the revenue? You can make a smart guess of the revenue. आप smart guess बता सकते हो. Guarantee कुछ नहीं होगा. Yeah. So smart guess आप थोड़ा लगा सकते हो proprietary information. Okay. This small company got Apurv Chamaria, who is the head of, ये Google के venture capital के head है. इनको ये अपने board पे ले आई है. अच्छी बात है, बुरी बात है. Apurv Chamaria is a big guy. He heads venture capital at Google in India. Is this a good thing or a bad thing for the company? Good thing or a bad thing? It's a good thing, right? Apurv would be smart, right? He would help the company grow, right? So this information is powerful information, actually, right? So yeah, I hope this is clear. Okay, one last example. Let's again play fastest finger first. Okay. Which company opened 4 Shuddhi Ayurveda Panchkarma hospitals? Which company opened Shuddhi Ayurveda Panchkarma hospitals? The correct answer is Gina Seco, right? They opened Ayurveda Panchkarma hospitals, right? Which company launched Sista 360 platform? Sista 360 platform. Sista 360 platform. Which company launched? Gunaji has answered it correctly. It's King's Infra. Right? King's Infra. Okay. Which company has received commissioning certificates from Gujarat Energy Development Agency? Gujarat Energy Development Agency. VK G has answered it correctly. It's KPI Green Energy. Right? Okay. Which company has set up 2 biscuit lines at Rajpura? Which company has set up 2 biscuit lines at Rajpura? It's Mrs. Bector. That's the correct answer, right? Okay. Now one more thing. Does setting up a biscuit line increase the probability of a profit uptrend in the future? Does setting up a biscuit line increase the probability of a profit uptrend in this company? Yes or no? All this information actually increases the probability of a profit uptrend continuing. Right? It is not guaranteed to actually increase profits, but probability pakka बढ़ाता है. Probability high हो जाती है. I hope you understand probability. Probability is chance. If I toss a coin, heads आएगा, tails आएगा, chance 50-50% है. But अगर मुझे पता है कि बिस्किट लाइन लगी है, तो रेवेन्यू बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं. वो 50-50 नहीं रहता, वो थोड़ा बढ़ जाता है. So I hope probability you understand. Investing is a game of probability. Chance का game है, right? So I hope this is clear for everyone, right? So I hope, is this clear to everyone that information predicts future? Information predicts future, right? So I want future information. I want future information. Can we write this down? I want future information. 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 Future information will actually help you. If you don't have future information, you can still guess, but आपका guess accuracy कम हो जाएगी. जितनी ज्यादा information है, उतनी ज्यादा accuracy है. जितनी कम information है, उतनी कम accuracy है. Right? So it is all about information. It is not about balance sheets or looking at this or that or financial metrics. It is a game of information. Right? That is why good investors read a lot. बैलेंस शीट रीड नहीं करते, वो बिजनेस समझते हैं, वो कंपनी की पोटेंशियल समझते हैं, वो इंफॉर्मेशन समझते हैं. डू यू नो
that there's a listed Indian company जो पेटीएम का कंपेटिटर ऑलरेडी लॉन्च करके बैठी हुई है. पेटीएम का कंपेटिटर एक स्मॉल कैप है, पेटीएम का कंपेटिटर लॉन्च करके बैठी हुई है. अभी उनके बीटा स्टेज पे आई थिंक छोटा सा उनका ऐप अभी प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हुआ है, बट ऑलरेडी उन्होंने एक ऐप बना रखी है एंड वो लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कैप है. दैट इज व्हाट कंपनीज आर डूइंग. इंडियन एसएमईज आर डूइंग पावरफुल फैंटास्टिक स्टफ. मतलब they can compete with the best of the best basically, right? So that's the power of Indian SMEs, right? So I hope future information point is very clear to everyone, that future information is very important. Okay. Someone is asking how to find companies in Sovrenn. See, I'll tell you what I do. I go to these pages and then I keep on filtering. Less than 40 I'll filter and see कि भाई क्या आता है. So this is how I filter information. यहाँ पे आपको P के filter दिख जाएंगे. So basically you can play around with the filters and find low P companies in Sovrenn, right? Same चीज आपको times के अंदर भी दिख जाएगा. Can you see this filter? Can everyone see the P का filter here? Yes or no? Can everyone see the P का filter? So you can play around basically. See ये सारा हमें खेलना है इसके अंदर कि भाई हमें कंपनी ढूंढनी है, कहाँ पे क्या मिल जाए, हमारा काम है कंपनी को ढूंढना. How frequently does a P change? रोज चेंज होता है basically. P हम our platform gets updated every day. Sovrenn Times. How many of you are reading Sovrenn Times? How many of you are reading Sovrenn Times every day? Sovrenn Times you must read. It is a very powerful piece of information. See, I showed you this, right? KP Energy को Sovrenn Times ने cover किया था. I can actually show it to you, which I showed earlier also. Keep hunting for low P stocks in Sovrenn Times with good information. हम भी वही कर रहे होते, मैं भी खुद भी वही कर रहा हूँ. How can I hunt for low P stocks in Sovrenn Times with good information? You can see this, right? See this. We covered this company at 10 ka P ratio. So you can play here also. Even if you look at this, right, you can play here. आपको यहाँ पे भी आप play कर सकते हो. तो आप यहाँ पे भी low P वगैरह you can actually discuss basically. ठीक है. So I hope so far is clear. Okay. Now next point is that we are not alone in the Indian stock market. Okay. There are people who are smarter than us also. And they have to disclose what they're doing in the market. Okay. We have to ensure that HNIs work for us. Okay. We have to ensure that HNIs work for us. Now let us look at this data. Okay. We go to discovery. Okay. And we look at this bulk deal data. Okay. Bulk deal data. Okay. Which company did India Equity Fund buy for 4.8 crore rupees? Which company did India Equity Fund buy for 4.8 crore rupees? Okay. Do you think that India Equity Fund is bullish on Marco lines? Is India Equity Fund bullish on Marco lines or bearish on Marco lines? Is India Equity Fund bullish on Marco lines or bearish on Marco lines? Bullish, right? Otherwise, you correct it, right? Okay. Which company did Sandeep Kapadia buy for 6.5 crore? Which company did Sandeep Kapadia buy for 6.5 crore? The answer is NPST, right? Network People Service Technologies. Okay. One question. Can we understand why Sandeep Kapadia purchased NPST? Why did Sandeep Kapadia purchase NPST? Because he read all this information. NPST in collaboration has launched TimePay, which transforms digital payments. NPST has announced a collaboration with Jupiter Money. NPST has backed the order from State Bank of Mauritius. The results have been fantastic. They have worked with Bank of Maharashtra. Results have been fantastic. Delivery hub इन्होंने start किया है. So, can we actually guess Sandeep Kapadia's mind without meeting Sandeep Kapadia?
Can we actually guess Sandeep Kapadia's mind without meeting Sandeep Kapadia? Yes or no? We actually guessed right now कि भाई संदीप कपाड़िया क्या सोच रहे हैं. हम समझ गए बैठ के, यहाँ पे बैठे बैठे हमें समझ चुके हैं संदीप कपाड़िया क्या सोच रहे हैं, राइट? कि भाई उन्होंने कंपनी क्यों खरीदी. ओके, अनदर क्वेश्चन. Which company did Ashish Kacholia buy for 34 crore? Which company did Ashish Kacholia buy for 34 crore? Srivardhani ji has answered it correctly. It's Universal Auto Foundry, right? So very, very easily available. Which company did Sandeep Singh buy for 1.6 crore? Sandeep Singh buy for 1.6 crore. Otherwise, answered it correctly. It's Vincis. Okay. Someone is saying that promoter sold 17% share and Ashish Kacholia purchased 17% share. Is that a good thing or a bad thing? Promoter selling and Ashish Kacholia buying. See, promoter selling to HNI is typically not a bad thing. Promoter को भी पैसा चाहिए होता है. Promoter भी इंसान है हमारी तरह. He also needs money. Promoter selling to public is typically a bad thing. Promoter selling to HNI is typically not a bad thing. Typically not a bad thing, right? So, right. So I hope that's clear. Which company was purchased by Ram Vallabh Katta for 1.2 crore? Ram Vallabh Katta for 1.2 crore. It's Kaka Industries, right? So we have to check HNI information and understand why HNIs are doing what they're doing. Okay, we have to understand HNI ka thesis, which we can understand by looking at other information about the company. HNI का thesis guess किया जा सकता है. I hope you understand the fact that without meeting the HNI, we can actually guess what the HNI is thinking. Right? We can guess their minds basically, which is powerful. Right? So another very, very important thing, I will make HNIs work for me. Can you write this down? I will make HNIs work for me. 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 Right? Okay. One question for everyone now. आप एक छोटी कंपनी स्टार्ट करते हो, छोटी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप फाउंडर हो. आप सीमेंट सेक्टर में स्टार्ट करोगे कि ड्रोन सेक्टर में स्टार्ट करोगे? सीमेंट में स्टार्ट करोगे, ड्रोन्स में करोगे? सी, सीमेंट सेक्टर में कंपटीशन भी ज्यादा है और सेक्टर भी धीमा है. ड्रोन सेक्टर में कंपटीशन भी कम है और सेक्टर भी फास्ट ग्रोथ है. बेसिक लॉजिक, ड्रोन में स्टार्ट करोगे, राइट? आपकी कंपनी जल्दी बड़ी हो जाएगी. सीमेंट में बड़ी होने में टाइम लगेगा. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड इमर्जिंग सेक्टर्स, in which case the sector will grow very fast. Okay, if the sector is growing at 50% per annum and your company is the leader in that sector, उसका ग्रोथ कितना रहेगा? आपकी कंपनी लीडर है और सेक्टर 50% से ग्रो करता है, तो आपकी कंपनी कितने से ग्रो करेगी? ग्रेटर देन 50%, राइट? अच्छा, तो एक सीमेंट सेक्टर है और एक ड्रोन सेक्टर है. सीमेंट सेक्टर का ग्रोथ रेट है 6%, ड्रोन का है 50%. सीमेंट की जो बेस्ट कंपनी है उसका ग्रोथ रेट कितना होगा और ड्रोन की जो बेस्ट कंपनी है उसका ग्रोथ रेट कितना होगा? सीमेंट की बेस्ट कंपनी का ग्रोथ रेट 7, 8, 10 होगा, 20, 15 होगा, 20 होगा. ड्रोन की बेस्ट कंपनी का 70 होगा, राइट? तो ड्रोन कंपनी हमेशा फास्ट ग्रो करेगी एज कंपेयर टू सीमेंट कंपनी, राइट? एंड अगर ड्रोन कंपनी फास्ट ग्रो करेगी तो उसका प्रॉफिट भी फास्ट ग्रो करेगा, एंड अगर प्रॉफिट भी फास्ट ग्रो करेगा तो प्राइस भी फास्ट ग्रो करेगा. हमें चाहिए फास्ट प्रॉफिट ग्रोथ जो कि अच्छे सेक्टर से मिलता है, राइट? ओके, रोबोटिक्स एमर्जिंग सेक्टर है, हाँ या ना? यस और नो? इज रोबोटिक्स एमर्जिंग? यस और नो?
Is robotics emerging? Yes or no? Yes, robotics is emerging. Is green energy emerging? Yes or no? Green energy emerging? Yes or no? Yes, right. Green energy is emerging. Is steel emerging? Steel emerging? Yes or no? Steel तो पहले भी था, आज भी, कल भी रहेगा. होटल, इज होटल इमर्जिंग? यस और नो? होटल कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा. So they're not emerging, right? We love emerging sectors. I love emerging sectors because they grow fast. I love emerging sectors because they grow fast. I love emerging sectors because they grow fast. Can we write this down? I love emerging sectors because they grow fast. So I think a lot of people have written, I love emerging sectors because they grow fast. Now we have to mix all five and then find out good companies for us. Okay. What we want is, someone is saying emerging sector किसको बोलते हैं? ड्रोन्स. जो चीज आज नहीं है बट 10 साल बाद होगी, वो इमर्जिंग है. आज आपको सड़क पे ड्रोन दिखाई नहीं देता है. You can't see a drone on the roads today, but you will see them later. And drone is emerging. Robotics is emerging. Green energy is emerging. Video effects is emerging. Your electrification is emerging. Manufacturing is emerging. इसका लिस्ट कहाँ मिलेगा? तो ये भी सॉवरेन में है. You can see sovereign में. All these are emerging sectors. Most of these. Green energy is emerging. Consumption sort of emerging. Infra भी बोल सकते हैं emerging है. इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कम है थोड़ा. Railways emerging. Semiconductor emerging. SME lending emerging. Defense, 5G, electric vehicle, electrification, newest tech, capital goods, all are emerging. ठीक है. So I hope this is clear and you can find companies here also basically. ठीक है. So I hope this is clear. And like I said, sovereign proprietary info I'm very proud of because this information very few people in the market have. ये उसी के पास होगा जो बहुत पढ़ता है. मेरी पूरी टीम में पढ़ती है बैठ के. That is why we have this information. This is not easily available information. अपूर्व चमारे एनपीएसटी में ज्यादा लोग को नहीं पता है. सोमेन बोस हरिओम पाइप में ज्यादा लोग को नहीं पता है. आदित्य विजन का पीएफ ग्रोथ ज्यादा लोग को नहीं पता है. आई थिंक ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जो पढ़ेगा ये आप भी ढूंढ सकते हैं, आपको भी मिल जाएगा. It is all public information, but बहुत ढूंढना पड़ेगा. So it will have to scan a lot of data sources to actually get this information. This highest quality information is actually the power of sovereign, which I'm personally really proud of because this is a lot of effort. बहुत मेहनत करना पड़ता है टीम को to actually find this. Team does a lot of effort to actually find this information. Right. So I think this is clear, right? So हमें चाहिए profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. अब हमें जहां ये पांचों मिलते हैं वो स्टॉक्स टिपिकली सबसे अच्छे होते हैं. ठीक है. अच्छा, एक स्टॉक है जिसमें पांचों ट्रू हो गए, क्या गारंटी है ऊपर जाएगा? हाँ या ना? एक स्टॉक है जिसमें पांचों ट्रू है, गारंटी है ऊपर जाएगा? हाँ या ना? गारंटी नहीं है. गारंटी किसी चीज की नहीं है. प्रोबेबिलिटी हाई है, चांस हाई है कि ऊपर जा सकता है, गारंटी नहीं है. नो गारंटीज, राइट? बट पांचों ट्रू है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि ऊपर जाएगा, गारंटी पक्का से नहीं. ठीक है. देयर इज नो नथिंग गारंटीज इन स्टॉक मार्केट. एंड अभी मैं स्टॉक पिकिंग थोड़ा सिखाता हूँ. लेट्स डू स्टॉक पिकिंग, बट हिस्टोरिकल करेंगे, अभी नहीं करेंगे बिकॉज मुझे बाय से रिकमेंडेशन ही देना है. तो इसमें देखते हैं. ओके. सो ये कंपनी देखते हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी. ठीक है. इसमें 22 मई पे चले आते हैं. ठीक है. 22 मई को प्रॉफिट अपट्रेंड था इस कंपनी में, यस और नो? प्रॉफिट अपट्रेंड था ऑन 22 मई, यस और नो?
हाँ था। ओके, क्या वैल्यूएशन अच्छे थे? हाँ, वैल्यूएशन अच्छे थे, यस। सेक्टर अच्छा था, यस, सेक्टर अच्छा था। एचएनआई बाइंग थी, यस, एचएनआई बाइंग थी। स्पेशल सिचुएशन को हम फंड रेजिंग बोलते हैं, फंड रेजिंग नहीं हुआ था, ठीक है। विजिबिलिटी हमारे पास थी फ्यूचर की, यस हमारे पास थी। तो पांचों ट्रू थे एंड स्टॉक दुगना हो गया। 22 मई को ये पांचों ट्रू थे और स्टॉक दुगना हो गया, राइट। सो देयरफॉर दिस इज हाउ वी डू स्टॉक पिकिंग विद इन सॉवरेन, कि भाई जितने ज्यादा ट्रू है मेरे पास उतना मेरी प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है। आई होप दैट इज क्लियर। द मोर ट्रूज वी हैव, द हायर द प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी लुक एट दिस कंपनी, आरके, ठीक है, आरके फोर्जिंग लेते हैं, ठीक है। सी देखो, सॉवरेन 1 साल पहले खुला है। आप पिछले साल का डेटा लोगे ना तब भी केपी एनर्जी में ऐसे ही आएगा। तो आइडियली तो और पहले लेना चाहिए था, बट ठीक है, मतलब अब वो वही है कि बेसिकली माय पॉइंट इज कि भाई सेम स्टॉक मेजॉरिटी काफी सारे टाइम फ्रेम्स पे अच्छा हो सकता है। इट्स नॉट कि वो पहले अच्छा था तो आज अच्छा नहीं, राइट। एनीवे, इसमें आ जाते हैं। आरके फोर्जिंग देख लेते हैं। 10 अप्रैल को क्या था, या मे बी उससे भी पीछे रहता है, ठीक है। ठीक है, 15 मार्च को प्रॉफिट अपट्रेंड था, यस था। पी लो था, यस वेरी लो था। सेक्टर अच्छा था, यस सेक्टर अच्छा था। एचएनआई बाइंग थी, यस एचएनआई बाइंग थी। स्पेशल सिचुएशन थी, यस स्पेशल सिचुएशन थी। विजिबिलिटी थी, यस विजिबिलिटी थी। और ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया, राइट। आपका 15 मार्च को प्राइस था 281, ठीक है। 15 मार्च को प्राइस था 281। आज देख लेते कितना है, आज है 644। तो ये यहां से बेसिकली यहां तक भाग गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से सीतागढ़ वैगन्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या हुआ था। पुराना जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, अगेन प्रॉफिट अपट्रेंड था, हाँ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, हाँ था। पी हाई था। तो देखिए मेरा पर्सनल फिलॉसफी तो इसमें मीट नहीं हुआ, तो मैं स्टॉक ऐसे स्टॉक को कभी नहीं खरीदूंगा। बट अब हाई पी जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। इसमें काफी सारे येसेस हैं, ये स्टॉक भी चला, ठीक है। तो वो ये एग्जैक्टली कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा किसी को नहीं पता। अब जैसे मैंने स्टॉक नहीं खरीदा कभी और कंसिडर भी नहीं किया क्योंकि इसका पी हाई था, बट स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो जितने ज्यादा येस होंगे उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। बट ऐसा हो सकता है कि भाई सारे येस हो जाए तब भी गारंटी कुछ नहीं है कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। तब भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा कि क्या होगा, राइट। थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा। जितने येसेस होंगे उतना अच्छी बात है, बट गारंटी कुछ नहीं है किसी चीज की। मतलब ऐसा हो सकता है कि ना भी चले, ऐसे स्टॉक्स होंगे जो नहीं चले होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मे बी कौन सा दिखाऊंगा जो फ्लैट रहा। हाँ, ये देख लेते हैं, मे बी हजूर, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो इसका सेक्टर इतना अच्छा नहीं है, ठीक। इसमें अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये 100 रुपए का स्टॉक था, ठीक है। इसका पी 5 का था, ओके। एंड अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे सब नहीं है, हाँ। तो इसमें लॉन्ग टर्म में यस है, शॉर्ट टर्म में यस है, पी लो है, सेक्टर ठीक ठाक है, काफी सारे यस है। बट ये 100 रुपए, ये 108 रुपए का था, ये ज्यादा नहीं चला। ये अभी भी 130 140 का ही है। तो गारंटी कुछ नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगेन अगर इसका एग्जाम्पल है हजूर का, तो ये फ्लैटिश रह गया। इसको देख लेते हैं, ये हमेशा फ्लैटिश रह गया, कभी चला नहीं ठीक से, आप देखेंगे। तो गारंटी कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। इस केस में फ्लैट रह गया स्टॉक। तो वो ये क्या होगा, अगर आप 15 स्टॉक लोगे तो कुछ चलेंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ वहीं के वहीं रह जाएंगे, कुछ किसी पे जाएंगे। अगर आपका अपसाइड ज्यादा बड़ा है, यू विल ऑलवेज मेक मनी, व्हिच इज द मल्टी-बैगर मैथ्स, राइट। इफ यू हैव a 3x 4x in a stock in your portfolio, you will actually do very well, right. So I hope this is clear that how do you do stock picking within sovereign, right? कि आपको ये सारा देखना और अपना गेस मारना है कि ओके इस तरीके से स्टॉक पिकिंग हमें करना है, ठीक है। ओके,
One more thing, what is prime, right? See, I've told you the more information you have, the better it is. Prime में बहुत सारा detailed information आता है. So you must read prime articles also. इसमें भी you can see like we put in a lot of detailed information. आप खोलेंगे तो भाई आपको बहुत ज्यादा बड़ा information मिलेगा. तो it is a far more detailed piece of information than anything else basically. ठीक है? So in fact इसने किसी ने वो भी लिखा है excellent analysis and it is driving my portfolio. Thanks for this prime article. So ये साजू भाई ने comment लिखा है. So prime article is far more detailed piece of information. डिस्कवरी में भी आप सेम ही चीज लगा सकते हो. डिस्कवरी में जाके सेम ही चीज हम कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर स्टॉक पिकिंग कर लिया, प्रेफरेंशियल में गए, पी को लो किया और इसके अंदर स्टॉक पिकिंग कर लिया बेसिकली. ठीक है. So I hope that is clear कि this is how you do stock picking within Sovrenn. आपको प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है. तो गारंटी कुछ नहीं है. स्टॉक्स के कैन और कैन नॉट मूव. वो the more yeses there are, the higher the probability. Right? That's how we think about investing basically. Right? So I hope that is clear. Okay. So is this can we write this down as well? Structural business, profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Can we write this down? Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Can we all write this down? Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. See, right now we have just learned basics. इससे भी एक advanced session है, वो आप जरूर करिएगा attend. Okay. How's the session so far? How's the session so far? How's the session so far? Are you able to understand? All right. So I think let's move ahead then. Okay. So, which is the most important line of the lecture? The most important line of the lecture is this line. I want profit uptrend. This is the most important line of the lecture. So naturally, what is our sell thesis? What is our sell thesis? That the profit uptrend has changed. हमें चाहिए कंपनियां जिनका प्रॉफिट बढ़ रहा है. जब प्रॉफिट बढ़ना बंद हो जाएगा तब हमें हो जाएगी दिक्कत. राइट? जब तक प्रॉफिट बढ़ता रहेगा प्राइस बढ़ता रहेगा. जब प्रॉफिट बढ़ना बंद हो जाएगा प्राइस भी बढ़ना बंद हो जाएगा. If profit continues to increase, price will continue to increase. If profit stagnates, price will also stagnate. So what do we naturally fear? What we fear is this. I fear sudden big drop in profits. I fear sudden big drop in profits. Right? जब एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत बड़ा गिरा तब हमें डर लग जाएगा कि भाई ये क्या हो गया है. राइट? अगर एक बहुत बड़ा गिरा है then we will be scared. Right? कि भाई ये क्या हो गया है. Let us show you an example. Let me show you an example. Okay. Let me show you this example. Okay. Maybe this one. Okay. Does this company have a profit uptrend? Yes or no? This company has a strong profit uptrend. Okay. Right? Does this company have a profit uptrend? Yes or no? Yes, right? Strong profit uptrend. But let us look at these numbers. Can you see this? This company had a strong profit uptrend. But this quarter was horribly bad. Right? Now, this is when we get scared.
that why was this quarter so horribly bad. अब नेचुरल क्वेश्चन है कि यार सब अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा है, अचानक से क्या हो गया, ये सडनली क्या हो गया, राइट? इस सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अचानक से क्या हो गया. अब पर्सनली जो मेरा व्यू रहता है कि जब बड़े ड्रॉप्स हो, 34 to 18 is a big drop, 25 to 13 is a big drop. We enter when the uptrend starts, but जब big drops आए, that is when we contemplate. इस सिचुएशन में आइडियली क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि 18 वन ऑफ था कि नहीं था. अगर वन ऑफ था तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद चलता रहेगा अप ट्रेंड जो है. अगर वन ऑफ नहीं था तो प्रॉब्लम है. और अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि वन ऑफ था कि नहीं था, तो वी शुड बी कंजर्वेटिव और हमें निकल जाना चाहिए, राइट? दैट इज माय लॉजिक. कि अगर समझो, समझने की कोशिश कर, क्वेश्चन समवन इज आस्किंग व्हाट इज द रीजन फॉर द ड्रॉप. I don't know. I don't think the management disclosed the reason for the drop. If the management does not disclose the reason, I am skeptical. I don't like to stay invested when I am skeptical about companies, right? Ideally, management should say that why this happened. When in doubt, I like to exit. If the if it is if it's a one-off and management tells me, I am perfectly fine. So we contemplate when there's a sudden big drop in profit. We think about an exit when there's a sudden big drop in profit. If we don't know, conservative people can exit, aggressive people can still stay continued. I don't like to stay continued. I like to exit if the profit has a big drop. Okay. Another example. This company, did this company have a profit uptrend till here? Yes or no? Did this company have a profit uptrend from here to here? Yes or no? Yes, this company had a proper profit uptrend from here to here. This was a sudden big drop, and that is where I would have wanted to exit, right? I don't like to stay here, invested here when there was a big drop. इसके बाद एक और बड़ा drop हो गया, right? So if you actually look at it, right, uptrend established हुआ था यहाँ पे, December 20 sort of established the uptrend, right? Let's check the price on December 20. December 20 में प्राइस होता था कुछ whatever 30 रुपीज के आसपास था. 30 रुपीज से 600 भाग गया एंड देन इट क्रैश्ड, राइट? अगर हमने दिसंबर 20 में लिया होता तो हम इन्वेस्टेड रहते, बैठे रहते, फिर हमारा यहाँ पे सेल ट्रिगर हो जाता जून के टाइम पे कि भाई बहुत गिर गया है, तो हम मे बी मार्च 21 में एंटर करते और मई 22 में एग्जिट करते, राइट? हम मार्च 21 यहाँ कहीं एंटर करते और मई 22 में एग्जिट करते, राइट? समवेयर अराउंड बेसिकली हियर. तो फिर वी वुड हैव मेड वेरी गुड मनी, right? So I hope the logic is clear that we fear sudden big drop in profits. If profit starts to remain same, that is not a problem. If profit drops by 10%, that's also not a problem. If profit drops big, that is a problem. Okay, another example. Okay, let's take another example. Okay. Does this company have a profit uptrend? Yes, this company does have a profit uptrend. There was a drop here, 60 to 54. A very small drop. Not a problem. Small drops are not problematic. Big drops are problematic and should be studied cautiously. ये small drop हुआ and recover हो गया. Small drops are not a problem. Huge drops are a problem and should be studied. ऐसा हो सकता है कि you think that it is one off and you can choose to stay invested. But small drops में तो सोचना ही नहीं है. Big drops तो study करना. Is that clear to everyone? That I fear sudden big drop in profits. Can we all write this down? I fear sudden big drop in profits. 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 I fear sudden big drop in profits.
I fear sudden big drop in profits. I fear sudden big drop in profits. Right, right. So I hope this is very clear to everyone that we fear sudden big drop in profits. Right. Now, okay. How do we start investing? Okay. Firstly, we start with an amount which is very small. Okay. We start with a small amount. We never start big. Okay. And in the beginning, equal allocation is the best thing. In the beginning, always have equal allocation. Let's say you want to invest 1 lakh rupees. The best way is कि आप 10,000 के 10 स्टॉक खरीद लो. ठीक है. I prefer at least 10 stocks in the portfolio. 10 se kam is like not a great idea. Okay. If you have a large portfolio, you can have up to 30 stocks. Someone is saying SME में money lot होता है. Don't buy SME in the beginning. You should not buy SME in the beginning. ठीक है. Yes, recording is available, so you can see the recording also on my YouTube channel. Okay. So in the beginning, always have equal allocation. For less than 1 lakh portfolios, at least have 10 stocks. For larger portfolios, have up to 25 to 30 stocks. Don't go beyond 30. 10 to 30 is a good number, typically. I hope that is clear, that 10 to 30 is a good number, right? And start small with equal allocation. Okay, so I hope that's again clear. Very important that you diversify. You can't have 3 stocks in the portfolio, 2 stocks in the portfolio, 1 stock in the portfolio. You must have 10 stocks in the portfolio. Is that clear? You must have 10 stocks in the portfolio. Can we all write this down? I will diversify. I will diversify. I will diversify. Can we write this down? I will diversify. I will diversify. I will diversify. I will diversify. So I hope this is very clear, right? Now, one more important point is that when do we enter? Is a question, right? When do we enter? All long-term uptrends start with 2-quarter uptrends. All long-term profit uptrends start with 2-quarter uptrends. Okay, so let us check. Let us check for this company. When did the profit uptrend start? Okay. When did the profit uptrend start for this company? After which quarter would you have confirmed that the profit uptrend has started? When did the profit uptrend start for this company? After which quarter? According to me, December 20 के बाद uptrend start हो गया था. There were consecutive quarters of uptrends here, right? December 20 में 3 quarter आ गए थे of consecutive growth, right? I would say December 20 पे uptrend start हो गया था. इसका क्या मतलब है? December 20 का रिजल्ट कब आता है? February 21 में. February 21 में एंट्री सिग्नल चालू हो गया था हमारा. We could have entered in Feb 21 when the price was almost 80 rupees. उसके बाद ये अपट्रेंड कभी रुका ही नहीं. Did this company ever register a sudden big drop in profits? Did this company ever show a sudden big drop in profits? Yes or no? Did this company ever show a sudden big drop in profits? Yes or no? It never showed a sudden big drop in profits. Never. Right? So profit uptrend began very around December 20 and it actually never showed a sudden big drop in profits. Right? Someone could have purchased this company around 20p ratio. I think today it is slightly expensive. 46 is slightly high, but a 20 may be available at one point of time.
Okay, all long term uptrends start with 2 quarter uptrends. मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ये मेरी कंपनी है, मैंने खरीदी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? This company declared a fantastic result in the March quarter. Okay, मार्च में फैंटास्टिक रिजल्ट था. Was the March result fantastic? Yes or no? Was the March result fantastic? Yes or no? इसको एक पेटेंट मिला है, पेटेंट. तो मेरे पास पेटेंट की इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने इसको एक क्वार्टर के बाद ही उठा लिया. बट वो करना नहीं चाहिए, गलत बात होती है, ठीक है? मेरे को लगा कि भाई अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इट कैन कंटिन्यू, तो मैंने एक क्वार्टर के बाद उठा लिया. और मैंने उठाया था 12 के पी रेशियो पे. 12 का पी रेशियो इज वेरी चीप, राइट? इस 12 का पी रेशियो चीप? यस और नो? 12 का पी रेशियो इज चीप. मैंने उठा लिया. सी, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ड्रॉप है फ्रॉम दिस, बट दिस इज अ वेरी टफ बेस लाइन टू बीट. ये बहुत टफ बेस लाइन है. तो मैं इसको भी बुरा रिजल्ट नहीं माना मैंने. फॉर मी इवन दिस वाज अ फाइन रिजल्ट एंड आई एम परफेक्टली इन्वेस्टेड, राइट? प्रेफर आफ्टर 2 quarter ऑफ ट्रेंड्स. वन में एडवांस लोग कर सकते हैं, बट वन में नहीं करना चाहिए, आइडियली नहीं करना चाहिए. एक और एग्जांपल लेते हैं. ओके, व्हेन डिड दिस कंपनी गिव अ बाय सिग्नल? When did this company give a buy signal of 2 quarter consecutive 2 quarter uptrend? When did this company give a buy signal? So it gave, someone can say around here also, यहाँ पे भी दिया है. Someone can say here also, मतलब थोड़ा टफ है. अगर आपको एकदम एग्जैक्ट करना है तो आई वुड से यहाँ पे दिया है, राइट? अगर आपने जून 22 के बाद लिया होता तो क्या हुआ होता? लेट्स सी. जून 22 में प्राइस कितना था? जून 22 में प्राइस कितना था? प्राइस था मोटा मोटी 360 रुपीज के आसपास, मतलब वट एवर 400 रुपए के आसपास. तो स्टॉक डबल हो गया होता 1.5 साल में, ठीक है? सो ऑल लॉन्ग टर्म कैन वी ऑल्सो लुक एट ईपीएस टर्निंग टू पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव. ये कर सकते हैं, मुझे याद करना पड़ेगा ये कौन सा होता है कि आप टर्नअराउंड की बात कर रहे हैं. सो आई विल शो यू दिस वन. ओके, दिस एग्जांपल आई कैन शो यू. एक मिनट, कहाँ पे दिखाऊं मैं एग्जांपल? हाँ, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल, राइट? This company was, it actually made a big loss here. यार ये भी प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं है. सी, इसमें भी अप ट्रेंड आपको दिखेगा. अब आप बोलो अप ट्रेंड आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो अप ट्रेंड मैं बोलूंगा मे बी यहाँ कहीं दिख गया था, बेसिकली यहाँ के, यहाँ के आसपास. एक और एग्जांपल लूं तो मैं आपका ये ले सकता हूँ, दिस वन आई कैन टेक, ठीक है? इसमें अच्छा, हाँ. व्हेन डिड द अप ट्रेंड स्टार्ट हियर? व्हेन डिड द अप ट्रेंड स्टार्ट हियर? अप ट्रेंड स्टार्टेड समवेयर अराउंड हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? नाउ यहाँ पे इससे बहुत एवरेज दे दिया, बट ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अजीब नंबर आ गए. समवन कैन से कि यहाँ पे एग्जिट सिग्नल हमारा ट्रिगर हो गया था, क्योंकि बहुत ही खराब नंबर से यहाँ पे. तो वो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, मतलब ये अलग अलग केस, बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं कि भाई क्या होगा. बट प्रेफरेबली ये सब बहुत छोटी कंपनी है, इसमें नहीं खेलना चाहिए. आई थिंक थोड़ी स्टेबल कंपनीज में खेलना चाहिए, थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा बड़ी हो. ये तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 50 करोड़. एनीवे, ठीक है? तो आई गेस आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से बेसिकली, दैट ऑल, व्हाई नॉट 2 quarter ट्रेंड फॉर सेल देन? सी, 2 quarter ट्रेंड फॉर सेल में क्या होगा कि आपका ना लॉस बड़ा हो सकता है. तो मुझे सडन में, इनिशियली वन शुड कंजर्वेटिव. तो इनिशियली आप जर्कीनेस दिखा सकते हो कि बहुत खराब आ गया तो बेच दो. मैं वेट कर लेता हूँ काफी बारी, एक आध 2 quarter भी, बट स्टार्टिंग में जर्कीनेस दिखानी चाहिए, मतलब थोड़ा सा. नहीं तो पैसा चला जाएगा, अगर आप जर्कीनेस नहीं दिखाओगे पैसा जा सकता है. तो one should be careful in the beginning, right? So that is why I want to be conservative, and I say that whenever we see a sudden big drop, we should actually try to think about selling at that point of time. Yeah.
So I fear certain big drop. Same profits are not a problem. Big drops are a problem. A little bit fall is not a problem. Okay. So I hope this is clear. So if there is a certain big drop in profits, will Sovereign Times have the explanation of it if given by the company? Yes, we will have. Typically, very few managements give sudden big drop का explanations. ज़्यादा management देती नहीं है. देंगी तो भाई रहता है. Someone is asking, do I provide PMS service? We don't provide PMS service. Sovereign is an information platform. Our belief is that everyone learns investing by themselves. हम चाहते हैं कि सब लोग खुद सीखें. That is why we don't have any sort of, we don't have a small case and we don't have a PMS service as well. See, after some time, it becomes like quite, right? It becomes quite, मतलब हो जाता है basically. ठीक है. So I guess I'm mostly done. Anything else that I have? So I think one session is done now. Sir, what about Confidence Petroleum? I'll take this question at the end of the vote. I think, what is the risk if you buy high PE stocks? They can go down. Just give me 1 second. I think I'll start taking questions in some time. What was I saying? So I think I'm done with the session. How was the session? Did you understand most of it? You will get the recording for this, which we will upload on YouTube. So then you can listen to the recording as well. I will, but still I would say that this is just like 50% of it. I think you should attend the second session also. Second session will be far more advanced, and you can also read the second session online as well. Let me share the link of the second session as well. Let me just do that. Okay. Where to check the recording? I'll just show you where to check the recording. Just give me 1 second. One more thing. This class is actually free, right? So anyone can actually join the class. So please do tell your friends. I think every Indian should learn investing. And most people don't do it, but please do tell your friends. तो ये मैंने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का लिंक डाल दिया है. इसी 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 जगह पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. ये पुराने मॉड्यूल्स है, बट इसी चैनल पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. एंड जिन्होंने सॉवरेन टाइम्स का ले रखा है उनको तो व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, उनको ईमेल पे भी मिल जाएगा. तो आई थिंक ये सारा आपको यहीं पे मिल जाएगा. सेशन 2 में आना जरूरी है. हाउ मेनी आर कमिंग फॉर सेशन 2? हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग फॉर सेशन 2? हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग फॉर सेशन 2? Yeah. So I hope this was clear. Like I said, the important learning. This is the most important slide of the session. This. I want profit uptrend. आप प्रॉफिटेबल कंपनी से पैसा लगाओ जहां ट्रेंड है, बड़ा पैसा बनेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा. प्रॉफिट गिरेगा, प्राइस गिरेगा. I think with this I end the session. And for those who have not yet taken the trial, you can go to sovrenn.com and take the trial. Sorry, once. Module 2 will be next week. Module 2 will be next week. One more thing. आप लोग अपने फ्रेंड्स को ट्रायल गिफ्ट भी कर सकते हो. इफ समवन हैज टेकन फुल एक्सेस है, अगर आपके पास फुल एक्सेस है, न्यूज एक्सेस है, तो आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो फ्री ऑफ चार्ज. अगर आपके फुल एक्सेस है और न्यूज एक्सेस है तो ये चलेगा. यू कैन एक्चुअली गिफ्ट योर फ्रेंड अ ट्रायल एज वेल. जिनके पास फुल एक्सेस है और वो है. जिन्होंने ट्रायल नहीं ले रखा है, दे कैन टेक द ट्रायल फ्रॉम हियर. ट्रायल में सब कुछ आता है. टाइम्स आता है, प्राइम आता है, डिस्कवरी आता है. Whatever we discussed, right? Everything is there in the trial. This is the trial access that we have. Please check glimpse of session 2. कुणाल भाई सेशन 2 पूरा YouTube पे पड़ा है, पूरा ही देख लो. YouTube पे जो मैंने लिंक भेजा है ना, उसमें पूरा सेशन 2 ही पड़ा है, तो आप वो देख सकते हो बेसिकली. ठीक है.
So I hope we are done, right? यहाँ से you can take the trial, and now we can take questions basically. When is session 2? Next week. Nisha ji, it's next week. ठीक है. Okay, so I think let's start taking questions now. Yeah, one sec. You can raise the hand in case you want to ask question. And was the session tough or simple? Is investing tough or simple? Is my question as well. Investing is actually not tough. कोई jargon नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. Investing is actually fairly simple. Do you share the watch list of stocks? I don't share my watch list. I invest. I do अपना investing. I think everyone should do their own investing. I don't say that I am. I have a good track record of investing, but I'm pretty sure मेरे से better investors in India निकलेंगे. So I think yeah. I think India will have really smart investors. Really smart investors. I'm sure some of you will be really smart investors. They will do very well. So yeah, I think everyone should invest themselves. That is why I don't share watch list about. ठीक है. So yeah, Yash bhai, your question. हेलो. हाँ जी, बोलिए विजय भाई, बोलिए. हल्के जी. हाँ जी. हेलो. हाँ जी, बोलिए. तो यूआईपी और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? किसमें और प्रेफरेंशियल में? यूआईपी. QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है. QIP में टिपिकली जो फंड्स वगैरह होते हैं, शायद उनसे पैसा लिया जाता है. आई थिंक प्रेफरेंशियल में QIP भी होता है. अगर आप फंड से पैसा ले लेते हो उसको QIP बोलते हैं, जितना मुझे पता है. इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल, आई थिंक. And one more is, what is the risk and if you take the high risk stock, IP? हाई पी में क्या होता है कि देखो, आपने हाई पी स्टॉक खरीदा, अब ग्रोथ नहीं आया तो स्टॉक बहुत शार्पली करेक्ट करेगा. अगर ग्रोथ आता चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, हाई पी का स्टॉक हाई पी पे ही रहेगा. अगर ग्रोथ नहीं आया तो हाई पी का स्टॉक बहुत गिरेगा. क्या मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. एक स्टॉक है वो 10 पी पे है और वो उसकी ग्रोथ अच्छी आ रही है. एक स्टॉक है जो 70 पी पे, उसकी ग्रोथ भी अच्छी आ रही है. अब 10 पी वाले स्टॉक की ग्रोथ कम हो गई और 70 पी वाले स्टॉक की ग्रोथ कम हो गई. 10 पी वाला स्टॉक हल्का सा करेक्ट करेगा, 70 पी वाला स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट करेगा. तो वैल्यूएशन कंफर्ट 10 पी पे बहुत हाई है, 70 में कम है. अगर ग्रोथ गई तो 70 पी वाले को बहुत नुकसान होगा, 10 पी वाले को ज्यादा नुकसान नहीं होगा. For example, yesterday we have discussed about NPST. हाँ. The P is 78 or something. तो अगर एनपीएसटी कल को खत्म हो गई तो एनपीएसटी बहुत शार्पली करेक्ट करेगा. अगर ग्रोथ खत्म नहीं हुई तो इट कैन कंटिन्यू टू ग्रो.